Hi everyone. So today we'll be doing sewing equipments and supplies. So stitching के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन से tools used होते हैं that we'll be learning today. So the different types of sewing equipments that are used, it can be categorized in the following way: measuring equipment, pinning and marking equipment, cutting equipment, stitching equipment, and finishing equipment. So in सारे चीज़ों के लिए there are different tools that are being used. In this video, we are going to talk about the measuring equipments. So the very first thing or the very first tool that we use in order to measure is a measuring टेप. इसको हम इंच टेप भी कहते हैं या फिर मापक फीता भी कहते हैं, वट एवर यू वुड लाइक टू कॉल इट. देन मोस्टली जो ये मेजरिंग टेप होता है, इट इज़ 60 inches long or 150 centimeters long. So on one side of the tape, you can there is demarcations of inches, and on the other side, it is in centimeters. The centimeters are marked on one side, and on the other side, inches are marked. So it is basically used for taking body measurements, and then we can use it in for pattern making or for drafting also, right? And it is very important to use a good quality synthetic good quality inch tape, preferably a synthetic one or a man-made one which is made with a glass fiber, because the only problem that occurs with it is that कि ये often stretch हो जाता है. In case it stretches out, तो क्या होएगा, there will be a faulty measurement. अगर इंची टेप किसी भी end से या फिर कहीं से भी stretch हो गया, तो measurements will be wrong, and therefore the final draft and whatever fit of the garment जो है वो suffer करेगा. So we have to make sure कि हम इसको एक a good quality of inch tape ही use करें. And then the ends, जो भी end है, as you can see in the picture also, the end is having a metal strip. So this metal strip should be on both ends because it helps the to keep the inch tape or measuring tape intact, and it prevents it from fraying. किसी भी तरह से stretch होने से भी बचाता है and फटने से भी बचाता है. Next, we have is a measuring scale. We all must have used the scale in our life. So mostly, the scale that we use in sewing is a ruler, or is a plastic ruler, that is most commonly used, or we can also use a wooden ruler also. But I prefer using plastic ruler because it's see through. तो कई बार हमें कोई guidelines की ज़रूरत होती है while marking lines on a pattern, so we can easily see through it, and it is more easily done. So it could be plastic also, it could be wooden also, and it could be aluminium also, right? Then mostly we use a 12-inch scale, and we can use a bigger one also, that we'll discuss later in the video. So then in this ruler, every inch is further divided into 8 equal parts, while in the aluminium scale ruler, it is divided into 1 by 32nd of an inch. Okay, उसके बहुत ज़्यादा further shorter divisions है. In case we need more accurate reading, then we go for an aluminium ruler. Then mostly it is used for making straight lines जहाँ पे भी हमने बनाना होता है. Then we use it if we have to check any kind of grain line, if we have to mark any tucks, pleats, bias, button, कहीं पे भी हमने कोई line बनानी है, then we use it. Or we also use it in case we have to use a tracing wheel, then as a guide we use it. इसके साथ अगर हम tracing wheel हमने use करना है, तो scale रख के करेंगे, तो the lines will be straighter, there won't be any deviations. Next we have is a T square or and an L square. So these are two kinds of scale. ये दोनों ही हम mostly use करते हैं जहाँ पे भी हमने cross grains बनाने होते हैं. So right angles पे हमने कुछ भी बनाना है, तो इन दोनों में से हम कोई भी एक use कर सकते हैं. Then in case of an L square, जो one arm होता है, it is 14 to 16 inches long, and the other arm is 24 to 30 inches long. So, this kind of question also comes in UGC, where they'll ask you what is the length of the of one of the arm of this. So, in short question answers, this can become, है ना? So we need to remember how long is one of the arm, or the exact figures. So 14 to 16 inches is one arm, and the other arm is 24 to 30 inches.
देन इट इज़ यूज टू मेक हॉरिजॉन्टल लाइंस, जहाँ पे भी हमने राइट एंगल पे कुछ बनाना है हम यहाँ यूज़ करते हैं। एंड मोस्टली वी यूज़ इट जहाँ हमने क्रॉस ग्रेन्स बनाने होते हैं, है ना, कहीं पे भी हमने एजेस बनाना है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, सो दैट देर इज़ नो डेविएशन एंड एकदम स्ट्रेट एजेस बने। सो इवन अदरवाइज अगर हमने किसी भी पैटर्न को ऑल्टर करना है, कहीं एक शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, देन वी यूज़ इट। Next we have is a metric scale. So this is the longer version of a normal scale that we're using. It is generally 100 centimeters long and 1 inch wide, wooden or iron. It comes in both these forms. Wooden ruler भी आता है और iron ruler भी आता है, and nowadays I think plastic ruler is also there, that see-through ones. So it is used for making longer straighter measurements. जहाँ पे भी हमने lengthwise, mostly lengthwise measurements जब बनानी होती है तो हम ये वाला यूज़ करते हैं। एंड ड्राफ्ट पैटर्न्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड देन वी जब भी हमने किसी फैब्रिक को अगर कट भी करना है तब भी हम इसको एज अ गाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर ग्रेन लाइंस मार्क करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, हेम लाइंस के लिए, वेर एवर जहाँ पे ज़्यादा लेंदियर मेजरमेंट्स हमने मार्क करने हैं, then we use the metric scale. Next is a hem gauge. So a hem gauge is it can be either a cardboard or it could be even made of a plastic. Plastic का भी आता है, cardboard का भी आता है, and then it comes metal का भी आता है. So this is mostly used जहाँ पे भी हमने एकदम exactly हमने कोई भी कर्व लाइन बनाने हैं, विच इज़ मोस्टली एट द हेम। अगर हेम में हमने कहीं पे भी प्रॉपर कर्व लाइन बनाने हैं, कहीं से छोटा बड़ा ना हो, देन वी यूज़ अ हेम गॉज। सो हम इस गॉज को रखेंगे फैब्रिक के ऊपर एंड देन वी प्रेस द फैब्रिक इन अ टाइटर वे, तो वहाँ पे क्रीज लाइन बन जाता है एंड देन वी कैन आयरन इट आउट। सो कहीं पे भी कर्व्ड हेम लाइन बनानी है, देन वी यूज़ दिस हेम गॉज। Okay, and then so it is used basically used for turning edges of a fabric and pressing it at a single। जब भी हम आयरन करते हैं, प्रेस करके प्रॉपर उसके edges and curves बन जाते हैं। So it is also useful in adjusting the length of the pattern। अगर हमने कभी भी लेंथ को ऑल्टर करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो एक लाइन के अगेंस्ट हमने उतने ही ऊपर या नीचे जाना है, then it is useful। As we can see in the diagram, there are different demarcations, है ना, 1 इंच का भी है, then 1 centimeter, then even lesser, so we can do whatever is required। नेक्स्ट वी हैव इज अ फ्रेंच कर्व। एक फ्रेंच कर्व जो है इट इज़ मोस्टली प्लास्टिक का होता है एंड इट इज़ सी थ्रू। एंड कहीं पे भी हमने किसी भी तरह की कर्व लाइंस जब बनानी होती है, देन वी गो फॉर अ फ्रेंच कर्व। सो मोस्टली मेकिंग द वाइल मेकिंग द आर्म होल कर्व और द नेक लाइन कर्व, हम फ्रेंच कर्व यूज़ करते हैं। एंड कहीं सो जो एक्यूरेसी है इट कम्स बाय यूजिंग दिस फ्रेंच कर्व। ओके, एंड इवन कहीं पे अगर हमने सीम अलाउंसेस देने हैं एंड वेस्ट कर्व भी कई बार हमने जब उसको ट्रू करना होता है, then also we use these kind of curves। So French curve is basically used for making any kind of curved lines. That's it. So in case you have any doubt, you can ask me in the comment box also.